Hello everyone, welcome to Civic Sense. I am Dr. Rupak Kumar. Today we are going to start with another paper called Methods and Approaches in Comparative Political Analysis. Methods and Approaches in Comparative Political Analysis. So this is one of the core papers for the students of political science across different universities in India, be it central universities or state universities. So आप सब के लिए comparative politics पढ़ना एक ज़रूरी है political science में, और comparative political analysis इसी comparative politics का एक हिस्सा है. तो इस सेमेस्टर में basically we will be looking at the theories and methods of comparative politics, how we do comparative politics, why we compare, what are the methods, what are the approaches, and then in the next semester or in the next lecture we will look at different aspects or the applied aspect of comparative politics, जिसमें कि आप अलग अलग देश के political systems को compare करते हैं, वहाँ के अलग अलग government को, elections को, etc. we all compare. So to begin with, as the paper states that we have to focus on methods and approaches of comparative political analysis. So there are words like methods, approaches, analysis. Okay, so these are deeply theoretical in nature. And then obviously comparative politics is there. So आपको सबसे पहले समझना है कि वो क्या तरीका है through which comparative politics is done. Okay, but before that let's begin that why we compare. Okay, what makes one, be it me or you, to begin a comparison of anything. Okay, so comparison ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई स्पेशल दिमाग वाले लोग ही करते हैं. We all are engaged in comparison day in and day out. Okay, आपके हर एस्पेक्ट्स को लोग कंपेयर कर कर देखते हैं. आप, हम, हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, we all begin with comparison. Okay? Therefore your parents also compare. Okay? कि वो बहुत तेज है पढ़ने में, वो बहुत कमज़ोर है, वो इस चीज़ में अच्छा है, वो इस चीज़ में अच्छा है, आपका मैथ्स कमज़ोर है, फलाने का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो वाई डू ह्यूमंस कंपेयर? ऐसा क्या मिलता है कंपैरिजन से? सो इन दिस लेक्चर वी विल बिगिन विथ आंसरिंग सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, दैट व्हाट कुड बी द रीजंस इन सोशल साइंसेस और इन पॉलिटिकल साइंस फॉर कंपैरिजन. एंड ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत कब होती है, कैसे होती है? Okay? So there are few reasons which is stated as the reasons for comparison. But to begin with, ऐसा नहीं है कि comparison कुछ ऐसी phenomena है जो बिल्कुल नया है social sciences में भी. As early as people like Aristotle was involved in comparison. हम जानते हैं कि एरिस्टोटल ने सिटी स्टेट्स के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया था, मोर देन 150 कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड देन ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन ऑफ कि कितने तरीके के गवर्नमेंट होते हैं थे उस समय, और उनमें से अच्छा क्या था, उनमें से ख़राब क्या था, गुड, बैड, आइडियल, नॉन आइडियल, ये सारे एरिस्टोटल ने बताया था. ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव दैट comparative text of the Aristotle, but we have the results or the conclusions of Aristotle. Similarly, across the time
many people have visited across the world, और इसलिए आप देखते हैं कि इतने सारे ट्रैवलर्स जो आते थे मिडिएवल टाइम्स में या उनसे पहले, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखते थे. अगर कोई इंडिया आया है तो इंडिया के बारे में लिखता था. बट along with this, one of the subtext or one of the feature of all those texts were that वो उनका जो आउटलुक होता था वो भी ये कंपैरेटिव एस्पेक्ट से ही होता था कि इंडिया का ये अच्छा है, यहाँ की कल्चर्स ये थे, यहाँ के फूड डिफरेंट थे, यहाँ का रहन सहन अलग था, यहाँ के लोगों का वैल्यू सिस्टम अलग था. सो वो अलग होना किस चीज़ से अलग था? सो ऑब्वियसली उन्होंने जैसा देखा है उससे अलग था. सो दिस वॉज ऑब्वियसली नॉट अ डायरेक्ट कंपैरिजन बट इट वॉज अ काइंड ऑफ इन्फेरेंस. आप इन्फेरेंस निकाल सकते थे कि जो व्यक्ति कहीं बाहर से आया है उनका वैल्यू सिस्टम या कल्चरल सिस्टम या सोशल सिस्टम कैसा था और हमारा कैसा था. एंड देयरफॉर कंपैरिजन इज वेरी ओल्ड फिनोमेना. The methods can be new, approaches can be new, but comparison as an exercise as such is has been always existent with the people across the world. Okay? इसी तरीके से एक और व्यक्ति हुए एलेक्स टॉकविल. He was a French and he visited America. Later he also wrote a book called Democracy in America, and there he wrote on the kind of society that America was. Okay? His accounts, his journey, his experience with America, their society, their culture, their politics. Okay? And that book is full of insights of American political system. Okay? That is not a direct comparison with, say, as with countries like France, but that says something distinctive about America, right? And so you will see that this is how comparison works. That कभी कभी आपको लगेगा कि कोई आपसे डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है, कभी कभी आपको लगेगा कि किसी चीज़ को बेहतर बताकर या कम बताकर कंपैरिजन किया जाता है, राइट? तो हम ये नहीं बताएंगे कि आप इस चीज़ में बेहतर हो या आपकी कमी ये है, हम बता देंगे तो कोई दूसरा बहुत अच्छा है. ओके? एंड दिस विल एंड यू कैन इन्फर द मैसेज. ओके? सो यू कैन अंडरस्टैंड द intrinsic message in this. Okay? So in comparative politics, obviously we are dealing with the political and social aspect of different countries. The idea is simple, that the human mind is in general a very inquisitive mind, right? हम progress ही इस तरीके से किए हैं, our society have progressed because we have been inquisitive, we have been innovative, we have been asking questions, we want to know more about different societies, we want to know more about different countries. Okay? And when we know about it, then we add something to our knowledge system, we add to our wisdom, existing wisdom, and therefore comparison becomes a very, what you can say is one of the prerequisites for development of society as a whole. Okay? Development of a knowledge system, right? We build on the comparisons. Okay? In other words, no society is perfect in itself. Okay? हर सोसाइटी की कुछ खामियां होती हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ मेलोडीज होते हैं, कुछ विशेषताएं भी होती हैं. और अगर आपको बेहतर बनना है तो आप सीखते हैं कोई और सोसाइटी कैसा है, कोई और ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसा है. okay? और हम अपनी मेलोडीज को छोड़ते हैं और अच्छाइयों को लेते हैं. और ये तभी पॉसिबल है जब आपने देखा है दुनिया की अलग अलग सोसाइटीज. एंड दैट इज़ वाई ह्यूमन
loves so much to travel, so much to experience. Okay, so this is why uh, knowledge building through the experience is essential, right? So comparison is the essence of all these things. Okay, so in comparative political analysis, we compare countries, or for that matter, comparison of different countries is not essential for comparative politics. All right, even in one country, we try to understand more about the political system, the social system, the economic system, how it functions. So this kind of exercise where comparison, or to quench the thirst of our knowledge, to know more about a society, more about a political system, how political system have evolved over time, how one kind of political system is better than the other kind of political system. For example, अभी की दुनिया में हम जानते हैं कि democracy is considered to be one of the best political systems, but this was not the case always, right? So how do we come at this kind of conclusion where we say democracy is the best form of political system, not the authoritarian, not the military, not the junta, not the totalitarian kind of government? This kind of conclusion we derive by understanding comparative politics. Okay, so the question which is at the very base is that why we compare. We compare in order to understand the description of a phenomena, right? So contextual description is essential for us to know what we are doing, what we are trying to know about, what we are trying to learn about, where we live, where we want to go. We want to know more about those things, alright? So आप जिस जगह पर पैदा हुए हैं, किसी एक जिले में हुए होंगे, वो किसी राज्य में पड़ता है, वो किसी देश में पड़ता है. Generally, with the cognitive ability, you begins to search about it. Okay, you begin to research about it. आप जानना चाहते हैं यहाँ और कौन कौन से लोग पैदा हुए, यहाँ की अच्छाइयाँ क्या है, यहाँ कोई हेरिटेज है क्या, यहाँ की कोई हिस्ट्री है क्या, यहाँ कोई और महान लोग आए हैं क्या. ऑलराइट, so we want to know more about the place, we want to know the description of a place. Alright, similarly, for instance, India ने decide किया है कि India will strengthen its ties with a country in Latin America called Brazil. So Indian government will try to know about Brazil, history, commonality, what bonds we can possibly share with Brazil. Okay, what kind of bonds will imitate or resonate with the people of Brazil. Okay, so you will try to know about the just the description कि कोई देश कैसा है, क्या होते हैं वहाँ, कौन सी भाषाएं बोली जाती है, वहाँ का कल्चर क्या है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है. Okay, so you will try to know about all these descriptions. Alright, that is why one of the reasons that why we compare. We want to compare because we want to know about the place. Alright, we want to know about certain aspects from where we can find some kind of similarity or differences. Okay, but we can find some kind of nodes through which we want to connect with that society. Right? When Britishers came to India, okay, they came here for trade. वो यहाँ ट्रेड करने आए ईस्ट इंडिया कंपनी.
but you will be surprised to know that they were, or one of the preliminary or one of the first task that they did was to know about the people, okay? People of India, यहाँ का कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, क्या भाषाएं हैं, कैसे समझ सकते हैं लोगों को, यहाँ की डिफरेंट फेस्टिवल्स क्या हैं, रिचुअल्स क्या हैं, and they had written all of this, so they had documented all of these things in their gazetteer. Okay, so in the British gazetteer you will find that they were also simply describing the people of India. Okay, so they were describing the people of India. Okay, remember, their descriptive could be simply wrong, could be simply a act or task of manipulation, could be a task of denigrating the people of India, and obviously they denigrated us. But this description, to describe, was part of their knowing, okay? Part of their attempt to know the people. Obviously वो उनकी नजरों से, so they described from their gaze. Okay, so it was the gaze of the Britishers that described us, in which denigration was one of the very, you can say, fundamental part of it. तो उन्होंने हमें नीचा दिखाया, उन्होंने हमें denigrate किया, demean किया. Okay, they but nonetheless they described it, right? So before you know or you want to know a society, description is one of the essential feature. That is why we compare, because we want to know about our surroundings. आप किसी से दोस्ती करते होंगे तो आप जानने की कोशिश करते होंगे ना उस पर्सन के बारे में, कौन है, कहाँ से आया है, क्या भाषाएं बोलता है, आपके जैसा सोचता है या नहीं सोचता है, राइट? उनमें डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, ऐसी क्या फैक्टर्स है जो आप दोनों को जोड़ती हैं, दोस्त बनाते हैं, राइट? सो दिस इज द act of description. You will not essentially or necessarily draw some conclusion out of it or some judgment out of it, but you will simply describe. Okay? जैसे आप कुछ ऐसे लिखते हो बचपन में गाय पर, आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हो उसे, राइट? कि गाय ये होती है. There is no judgment, there is no conclusion of it, you are just describing an animal, right? जो जैसा आपने देखा या जैसा आपको बताया गया आपने उसे डिस्क्राइब कर दिया. So we compare because we want to describe a phenomena, a society, a country, a place. So this kind of description is, as I said, is very contextual. Okay? This is a contextual description, that we are describing a particular thing or a particular phenomena about which I wanted to know. So when you describe, your knowledge becomes systematic. So now you can actually say something about a society in a very systematic manner. Okay, that is why, or for one of the reasons that why we want to describe something. Second reason that why we compare is classification. All right, so moving ahead, classification. So now you know about a thing that you just endeavored to know. आप अब जानते हो एक जगह के बारे में. Okay, so इंडिया ब्राज़ील से अपने रिश्ते बनाना चाहता था, बायलैटरल ट्रीटमेंट ट्रीटीज़ और फॉरेन
relations. So India wanted to know about Brazil. So now they have the description of it. Second thing which is related to or linked to it is, after knowing a place, you will want to put those places in certain categories. All right, you will classify that. And how do we do this? For instance, in the beginning I said that Aristotle studied more than 150 constitutions in order to arrive at a conclusion कि which is the best form of government or which is the worst form of government. तो उनके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, डिस्क्राइब किया कैसा था कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, राजा कैसे काम करता था, लोगों पीपल वर सिटीजन्स और नॉट, स्लेव्स, वेमेन, ये सारे रिलेशनशिप्स कैसे थे, वेलफेयर कैसे होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था. So he just described it. After describing, so he described all the constitutions and then he had a look at it. Okay? So, and he, what is called, he analyzed it. After the analysis or after a careful consideration of the description, he could classify all these constitutions into 6 forms. Right? और ये 6 फॉर्म में उन्होंने डिवाइड कर दिया गवर्नमेंट को. एक को उन्होंने कहा कि दिस इज मोनार्की, दूसरे को कहा दिस इज ओलिगार्की, एक को कहा दिस इज डेमोक्रेसी. फिर उन्होंने कहा कि एक दिस इज टिरेनी, दिस इज एरिस्टोक्रेसी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलिटी. So these 6 kinds of government, what Aristotle have defined or had defined, was an act of classification. ये classification आपने तभी बना पाए when you describe that after a description there were few features जो एक चीज जो बहुत सारे डिस्क्रिप्शन को एक जैसा बनाता है. ओके, सो कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ फीचर्स एक में मिलेंगे, कुछ किसी में दूसरे में मिलेंगे, फिर आपने उसे कैटेगराइज किया है. ओके, आप सब अपने घरों में कपड़े सजाते होंगे या किताबें सजाते होंगे. सो यू क्लासीफाई इट, राइट. मेनी ऑफ द बुक स्टोर्स में आप देखोगे कलर क्लासिफिकेशन होता है. ठीक है, तो अगर कलर बुक के कवर अगर रेड हैं तो ऑल द रेड विल बी एट वन प्लेस, ब्लैक्स विल बी वन प्लेस, वाइट्स विल बी एट अनदर प्लेस. बहुत सारे बुक स्टोर्स में दिस विल बी क्लासिफाइड बाय सब्जेक्ट्स. ऑलराइट, तो सोशल साइंस में भी पॉलिटिकल साइंस के एक जगह होंगे, पॉलिटिकल साइंस में भी गवर्नमेंट वाले एक जगह होंगे, थियोरी वाले एक जगह होंगे, फिलॉसफी वाले एक जगह होंगे, सोशियोलॉजी वाले दूसरी जगह होंगे, हिस्ट्री वाले तीसरी जगह होंगे. दिस इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ कैटेगराइजिंग, एक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. आप बांट रहे हो. वेयर यू अप्लाई योर ब्रेन, यू आर क्लासिफाइंग बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स. दिस इज नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ unthinkable act, or you are doing certain things without giving a thought. So after the description you classify. Okay, the second reason that why we compare is because we want to classify our thoughts. Okay, so आपने डिस्क्राइब किया कि दुनिया में इतने तरीके के देश हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा ऐसा है. कहीं आपने देखा कि प्रेसिडेंट पावरफुल है, कहीं आपने देखा प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, कहीं आपने देखा आर्मी जनरल पावरफुल है, कहीं आपने देखा कि लोग चुनाव करते हैं, लोग वोट देते हैं, फिर सरकारें बनती हैं. कहीं आपने देखा कि लोग डायरेक्टली चुनाव नहीं करते, लोग किसी और को वोट देते हैं, वो जाकर किसी और को चुनते हैं, और इन सब के आधार पर आप डिवाइड करते हैं ना. देन यू से दिस इज अमेरिका एज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, इंडिया एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. राइट, कहीं आप कहते हो कि यहाँ पर मिलिट्री जुंटा है क्योंकि वहाँ
कोई सरकार नहीं है। कहीं आप कहते हो कि चाइना इज अ वन पार्टी डिक्टेटरशिप, ओके, so you are giving it a very serious thought and then you are arriving at a conclusion जहाँ पर कि आप classify करते हो, where you classify these kinds of government, okay, so you will not be able to understand comparative politics without classification, right? Or you will not be able to understand any society without classification. Description is essential, but after the description you will end up classifying, categorizing, okay? तभी तो आप कहते हो ना इस देश में और किसी और देश में कुछ सिमिलैरिटी है। कहीं का फूड के साउथ एशिया में हर देश का फूड में कुछ सिमिलैरिटी है, क्लोथिंग में कुछ सिमिलैरिटी है, हमारे कल्चर्स इंडोनेशिया हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मिलते हैं। हाउ can you possibly say this without classification, without categorization? Okay, that is why we compare, because we want to classify, okay, for our brain, for our cognitive ability। हम चीज़ों को बहुत ही साफ तरीके से समझना चाहते हैं, उनके फीचर्स को जानना चाहते हैं, हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहते हैं, and therefore we classify, all right?